नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश की राजधानी गांधीनगर से डीजीपी के द्वारा जीपी स्मैश सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के नागरिकों से जुड़ने की गुजरात पुलिस की एक सराहनीय पहल एक्स प्लेटफॉर्म पर राज्य के नागरिकों की शिकायतों का कुछ ही घंटों में समाधान किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं, शिकायतों और सुझावों को संवेदनशीलता के साथ सुनना, उन्हें शीघ्रता से संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना और समय पर उनका समाधान करना है। 1 मार्च से शुरू हुई इस पहल के तहत अब तक 850 से ज्यादा शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा चुका है। जीपी स्मैश की राज्य स्तरीय समर्पित टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपराध संबंधी गतिविधियों के साथ साथ नागरिकों की शिकायतों पर 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम में नजर रखती है। सभी जिलों, रेंजों और इकाइयों में एक अलग टीम भी काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने गुजरात पुलिस की एक अनूठी और उन्नत पहल जीपी स्मैश गुजरात का शुभारंभ किया है। पुलिस सोशल मीडिया निगरानी, जागरूकता और व्यवस्थित संचालन 1 मार्च 2025 से शुरू किया गया है। इस पहल के तहत राज्य के नागरिकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अब तक संबंधित जिले, रेंज या इकाई के प्रमुख को अभ्यावेदन प्रश्नों को टैग करने और उनका समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया पर उठाई गई चिंताओं, शिकायतों और सुझावों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ सुनना, उन्हें शीघ्रता से संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना और उनका समयबद्ध समाधान करना है। जीपी स्मैश कैसे काम करता है? जीपी स्मैश एक सोशल मीडिया जागरूकता और निगरानी परियोजना है जिसमें राज्य स्तर की एक समर्पित टीम पुलिस विभाग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई अपराध संबंधी गतिविधियों, शिकायतों या अच्छे कार्यों पर 24 घंटे 7 दिन वास्तविक समय में नजर रखती है। ये टीम गुजरात पुलिस के एक्स हैंडल को टैग करके की गई पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद कानून व्यवस्था, यातायात समस्या, शराबबंदी, साइबर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार जैसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में संबंधित रेंज, जिला या इकाई प्रमुख को उसी पोस्ट से आवश्यक जांच कर तुरंत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। संबंधित जिला, रेंज या इकाई प्रमुख अपनी टीम को इस पोस्ट के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी देंगे और उसी पोस्ट पर टिप्पणी करके समय सीमा के भीतर किए गए कार्यों या की गई कार्रवाई की जानकारी भी देंगे। राज्य स्तरीय टीम के अलावा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की निरंतर निगरानी 3 स्तरों, रेंज प्रमुख और जिला पुलिस प्रमुख पर की जाती है। अब तक 850 से अधिक समस्याओं का सकारात्मक समाधान जीपी स्मैश पहल मार्च 2025 से लागू की गई है। तब से कानून व्यवस्था डीआईजी श्री दीपक मेघानी के नेतृत्व वाली जीपी स्मैश टीम ने 850 से अधिक नागरिकों के अभ्यावेदन संबंधित अधिकारियों को भेजे हैं और कुछ ही घंटों में उनकी समस्याओं का समाधान किया है, जो जनसंचार के लिए एक बड़ी सफलता है। नागरिकों को लग रहा है कि गुजरात पुलिस लगातार उनके साथ है क्योंकि पुलिस सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। जीपी स्मैश परियोजना के परिणामस्वरूप राज्य के नागरिक अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि गुजरात पुलिस लगातार उनके साथ है, क्योंकि पुलिस सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। सोशल मीडिया पर मुद्दे अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रह गए हैं, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। परिणामस्वरूप नागरिकों का पुलिस पर भरोसा और सुरक्षा की भावना काफी बढ़ गई है। जीपी स्मैश सिर्फ डिजिटल निगरानी नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार और तकनीक सक्षम पुलिस व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी। અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે અને સોશિયલ મીડિયામાં જે ડેટા જનરેટ થાય છે અને લોકોની વચ્ચે જે કમ્યુનિકેશન થાય છે એનાથી પોલીસને આખી જે કામ કરવાની જે કાર્યશાલી છે એમાં આ કઈ રીતે આપણને બેનિફિશિયલ થઈ શકે, કઈ રીતે ફાયદારૂપ થઈ શકે એ અંગે આપણે વિચાર કર્યો અને વિચાર કર્યા પછી ગુજરાત પોલીસ તરફથી એક પ્રોજેક્ટ 1 માર્ચ 2025 રોલ આઉટ કરવામાં આવે। આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે જીપી સ્મેશ। કોઈપણ વ્યક્તિને પોલીસ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા હોય, એમની કોઈ રજૂઆત હોય, એમની કોઈ ફરિયાદ હોય, એમનો કોઈ અભિપ્રાય હોય તો એ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકો કરતા હોય છે। જીપી સ્મેશ અંતર્ગત કોઈપણ વ્યક્તિ જ્યારે ગુજરાત પોલીસને अथवा डीजीपी गुजरात ने टैग करी सोशल मीडिया पर कोईपण कम्युनिकेशन करता हो तो आ कम्युनिकेशन ने तुरत ज ध्यान में लई एनालाइज करी अने एनालाइज कर्या पछी एमां शुं कामगीरी करवानुं थाय अने ए कामगीरी कोण करे
એના માટે ડીજીપી ઓફિસ પોલીસ ભવનમાં એક જીપી સ્મેશ ટીમની રચના કરવામાં આવી અને એ જ રીતે ગુજરાત રાજ્યના દરેક પોલીસ કમિશનરેટમાં અને દરેક જિલ્લાઓમાં પણ એક જીપી સ્મેશની ટીમની રચના કરવામાં આવી. હવે દાખલા તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડીજીપી ગુજરાતને અથવા ગુજરાત પોલીસના હેન્ડલ ઉપર કોઈ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપણને કોઈ માહિતી આપે અથવા કોઈ રજૂઆત કરે, કોઈ ફરિયાદ કરે અને એ ફરિયાદ દાખલા તરીકે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું હોય તો તુરત જ આપણી સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલથી એસપી સુરેન્દ્રનગરને આપણે ટેગ કરી નાખીએ છીએ. એ ટેગ કરતાની સાથે એસપી સુરેન્દ્રનગરની ઓફિસની જીપી સ્મેશની ટીમના ધ્યાન ઉપર આવે તો એના ઉપરથી એ તાત્કાલિક ત્યાં કાર્યવાહી કરે અને આપણે જે એસપી સુરેન્દ્રનગરને જાણ કરીએ છીએ એ આપણે જે તે કમ્પ્લેનન્ટને, જે તે ફરિયાદીને પણ જાણ કરીએ છીએ કે તમારી જે કંઈ ફરિયાદ છે એ ફરિયાદ એસપી સુરેન્દ્રનગરને મોકલી આપવામાં આવી છે. એના ઉપરથી એસપી સુરેન્દ્રનગર કે એસપી જુનાગઢ હોય કે પોરબંદર હોય એ લોકો જે કંઈ કાર્યવાહી કરે એ કાર્યવાહી ત્વરિત પૂર્ણ કરી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે એની જાણ પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ડીજીપી ગુજરાતને પણ કરે, ગુજરાત પોલીસ અંડરને પણ કરે અને જે તે ફરિયાદીને પણ કરે. એટલે કોમ્યુનિકેશનની આખી જે ચેનલ છે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એ ખૂબ ત્વરિત થઈ જાય અને આપણે આ કાર્યવાહી તુરત જ અને પરિણામલક્ષી થાય એના માટે આપણે જ્યારે ચાલુ કર્યું 1 માર્ચ 2025માં ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આશરે 850થી વધુ ફરિયાદોનું નિકાલ અને રિઝોલ્વ આ જીપી સ્મેશના માધ્યમથી કરવામાં આવી છે. ખૂબ સારા સક્સેસ સ્ટોરીઝ છે. હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાં જ આપણે ખ્યાલ હશે કે નર્મદા જિલ્લામાં અમુક સ્ટુડન્ટ્સ ગયા હતા, એ લોકો ટ્રેકિંગમાં ગયા હતા અને ટ્રેકિંગમાં ગયા પછી એ લોકો પોતાના રસ્તા ખોવાઈ ગયા હતા. એટલે એમાંથી એક વ્યક્તિએ ખાલી અમારા સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલમાં ગુજરાત પોલીસને ટેગ કર્યો અને એના ઉપરથી તુરત જ સ્થાનિક પોલીસ એલર્ટ થઈ, વિજિલન્ટ થઈ, ટીમ મોકલી અને એ લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને પાછા લઈ આવ્યા. એટલે એ પ્રકારના અનેક સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, જીપી સ્મેશના માધ્યમથી જે કાર્યવાહી ગુજરાત પોલીસ તરફથી કરવામાં આવી છે એના અનેક સક્સેસ સ્ટોરીઝ છે. અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ જે આખું જે કોમ્યુનિકેશન છે એ કોમ્યુનિકેશન ગુજરાત પોલીસ પોતાના બેનિફિટ માટે અને લોકોના બેનિફિટ માટે ઉપયોગ કરવાનું એક જીપી સ્મેશ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે.